इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय IEPFA, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर। सुरक्षित कल के साथ साथ एनपीएस आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुल या फीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शहर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे, कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, मनोज पाठक। नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Key domestic indices fall around 1%. Sensex closes at 71,140. Nifty settles at 21,522. ADNOC Gas announces 10-year agreement to supply 0.5 million metric tons per annum of liquefied natural gas to GAIL. And Brent crude trades at $82.38 per barrel in global crude market. घरेलू शेयर बाजार में आज हुई गिरावट, लगभग 1% घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 71,140 पर हुआ बंद, निफ्टी 21,522 दर्ज हुआ। एडीएनओसी गैस ने गेल के साथ प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मेट्रिक टन तरल प्राकृतिक गैस LNG आपूर्ति करने के लिए 10 वर्षीय सौदे की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $82 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में आज मुनाफा वसूली की गई और प्रमुख सूचकांक लगभग 1% घाटे में रहे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 802 अंक यानी 1.1% घटकर 71,140 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 216 अंक यानी 0.99% घाटे के साथ 21,522 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी बिकवाली तेज थी। BSE मिड कैप इंडेक्स 0.53% घाटे में रहा। हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में निवेशकों का रुझान देखा गया और BSE स्मॉल कैप इंडेक्स 0.18% लाभ के साथ बंद हुआ। The key domestic stock indices fell around 1% amid mixed cues from the global share markets. The BSE Sensex lost 802 points or 1.11% to close at 71,140. The NSE Nifty fell 216 points or 0.99% to settle at 21,522. In the broader market at BSE, the mid-cap index fell 0.53%, while the small-cap index gained 0.18%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 5 companies appreciated,
while 25 companies declined. Tata Motors climbed 2.19%, Hindustan Unilever gained 0.6% and SBI added 0.59%. On the other hand, Bajaj Finance crashed 5.17%, Titan shed 3.37% and Ultratech Cement dropped 3.08%. In sectoral indices at the BSE, all sector registered losses. Consumer durables gave up 2.4%, capital goods declined 1.24% and power sector lost 1.12%. FMCG fell 1% and utilities slipped 0.9%. The overall market breadth was negative as the shares of 1,885 companies appreciated while those of 1,929 declined. A total of 93 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में 83 रुपए 11 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक थोड़ी कमजोरी के साथ 103.44 पर कारोबार कर रहा था। श्रोताओं, हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री अश्विनी महाजन। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम अश्विनी। नमस्कार। बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। बाजार में कुल मिलाकर आज मुनाफा वसूली दिख रही है, किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? इसे मामूली करेक्शन माने या कोई बड़ा संकेत माने बाजार में गिरावट के? देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से लगातार सेंसेक्स ऊपर जा रहा है और रिकॉर्ड लेवल पर 73,000 तक पहुंच गया था जी। तो ये थोड़ा बहुत करेक्शंस, थोड़ा बहुत कभी FIIs का आना कभी जाना ये लगातार चलता रहता है। इसमें कोई विशेष गंभीर विषय नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले काफ़ी समय से FPIs जिस प्रकार से पहले जब आउटफ्लो होता था तो बहुत ज़्यादा गिरावट होती थी और लंबा समय तक चलती थी। जी। अभी आजकल ये थोड़ा फ़र्क हो गया है क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आजकल खूब निवेश कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इसका जो विशेष कारण रहा है वो रहा है कि हमारे देश में भी बहुत अधिक मात्रा में अभी म्यूचुअल फंड्स और बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए हैं और बड़ी मात्रा में लोग अपना जो सेविंग्स है वो म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ हमें मिला है। इससे हमें अपने रुपये को भी मजबूत करने में मदद मिली है और शेयर मार्केट्स में भी अपहेवल्स काफ़ी कम हुए हैं। Ashwini, ahead of the US Federal Reserve policy decision which is due on Wednesday, which we will discuss in a while, Indian equity indices closed in a deep red primarily due to the dragging of the Bajaj twins and the profit booking at in index heavyweights like Reliance and HDFC Bank. Now, if I were to give you the figures, then the Reliance Industries and HDFC Bank alone contributed about 336 points on today's loss. So what's your take on this? What is the reason why they dragged the Sensex down? You see, some experts, they are saying that Federal Reserves may reduce rates. So it can have some impact, but I don't see, as I've just told, that since domestic institutional investors are investing heavily and they are capable of doing so continuously, therefore I don't see much of a big crisis in this case. But this is a huge downturn that we have experienced today, and we did some time back as well. We will talk about this particular point after this small commercial break. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्रा में। So Ashwini, we were talking about the huge fall that we experienced few days back also, and then today also we had a major fall. Where were the domestic investors' inclination at that time? You see, it all depends upon the situations. I see domestic investors continuously making corrections, but so far as this particular, sometimes domestic investors also see whether this fall is going to last longer, and then they can come in purchasing at a lower prices, as the FPIs had also been doing. But if you see after that fall, which was a few days back, again there was a revival in the market. So this keeps on going, and domestic investors are also becoming smarter, and sometimes I find them more smarter than the FPIs. Okay, today investors exhibited a reversal in their strategy, so to speak, adopting a very cautious approach in anticipation of the upcoming FOMC meeting and interim budget amid persistent concerns regarding elevated valuation and escalating tensions in the Middle East. In all this, going forward, how do you see the investors behaving? See, if the global issues are there, they are there, they are going to continue. But so far as the coming budget is concerned, I don't see any downfall in government expenditure. Rather, people are expecting at least 15% hike in the capex and so on. So therefore, I don't see much of the reasons why there should be a downside in the investor's mind. And I see in the coming days, day after tomorrow, the budget is there. So I think on the budget day, there should be a very good hike in the स्टॉक मार्केट। यहाँ पर अश्विनी जी हम समझना चाहेंगे कि आपके जो ये अंदाजे हैं वो उनका आधार क्या लेके चल रहे हैं कि बाजार में ऊपर उठने के आसार हैं बजट के संकेतों से, किस रूप में भांप रहे हैं आप सरकार के इस बजट को और इससे शेयर बाजार को होता हुआ लाभ देखकर? देखिए, जो बजट है वो तो सरकार का लेखा जोखा रहता है जी। हमने पहले 8 महीनों में देखा कि जो फिस्कल डेफिसिट हम लेकर के चल रहे थे, उस फिस्कल डेफिसिट का मात्र 50% ही हमने उपयोग किया जी। ये बड़ी बात और है। आगे आने वाले 4 महीनों में आप कितना ज़्यादा कर लेंगे ऐसा लगता नहीं बहुत ज़्यादा। और हालांकि कुछ हद तक कैपेक्स में कुछ गिरावट आई, लेकिन दैट वाज मोर देन कम्पनसेटेड बाय द हाइक इन द revenue expenditure. And we see increase in tax revenues across the board, whether it is GST, we have reached 1.66 average monthly receipts. If we see the income tax, 30% hike, 20% increase in the corporate tax, and we expected hardly 10.7% growth in this year, but which was surpassed by 15% growth in the overall revenues, and therefore I don't see any increase in the fiscal deficit from 5.9% what was anticipated. I think it may be around 5.6% of the GDP. Okay. So that is going to give a big support to the market. And on the other hand, if we see the capex, as I have already said, that 15% hike in capex, if it happens, that is going to give a big boost to almost all the shares. You see, construction sector is going to get impacted, railways are going to get impacted. So all that is going to give a boost to the market. This is what I feel, and that will, even if Fed increases the rates, I don't see any reason to have
any big impact on the Indian domestic market. So what you mentioned about capex being, maybe increased by 10 to 15%, and also we were talking about the interim budget ahead of the general elections. There is a sense of euphoria. There is capex, as you said, there is optimism that the capex might just get increased a little. And then also the prevailing domestic macroeconomics conditions also lead to the optimism that the capex related investment by the government will continue without compromising on fiscal consolidation. What's your take? That's what I'm saying. Fiscal consolidation, already the government is very cautious. And they are very conscious about the whole issue of fiscal deficit, and it is expected that the next year budget, this budget, the government may come out with nearly 5.4 or 5.5% fiscal deficit. And if you see in all these 10 years, there has been a consistently appreciation or acceleration of growth, and at the same time the government's eyes were also on the welfare, on improving the situation of the poor. And if you see the UNDP report, which clearly says that, and UNDP had for the first time had appreciated the India's performance in multidimensional poverty, and we are down to 0.069 index, which is spectacular, because 81 countries which are included in the UNDP multidimensional poverty index, they are maintaining 0.202, and we have reduced it to 0.069. And this has happened, and this is also very important, this has happened only in these 5 years, from 15-16 to 19-21. And despite the fact that there had been a major problem in the global economy because of the COVID-19, but despite that, we have done marvelous in terms of poverty reduction. We have done marvelous in now, because of we had missed Industrial Revolution 1, we missed Industrial Revolution 2, we missed Industrial Revolution 3 also. But in Industrial Revolution 4, whether you talk of space, or you talk of AI, or you talk of any technology, we are well within the center of the Industry 4.0. So जी, यहाँ पर हम ये श्रोताओं के नज़रिए से समझना चाहेंगे कि आपने औद्योगिक क्रांति की बात की और कहा कि जो औद्योगिक क्रांति 4 है, जिसमें कि एआई सहित बाकी तक डिजिटली जो हम दुनिया के सामने आगे दिख रहे हैं, ख़ासतौर से वित्तीय कह लें कि फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा जो यूपीआई है वो दुनिया को दिशा दे रहा है और बड़े पैमाने पर हम जा रहे हैं। तो ऐसे में सीधा जो हमारे मार्केट मंत्र सुनने वाले श्रोता हैं, उनके नज़रिए से इनसे जुड़ी हुई कंपनियां, इनसे जुड़ा हुआ सेक्टर जहां आपको दिख रहा है कि बाजार में निवेश करने से उन्हें अधिक अच्छा लाभ मिल पाए, मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर के इकोनॉमी को जो बूस्ट मिल रहा है जी, और जो लोगों में अपेक्षाएं आकांक्षाएं जाग रही हैं, पहली बार भारत में लोग अपने देश को विकसित देश 2047 तक देखना चाहने की तरफ आगे बढ़ गए। यानी ऐसा कभी हुआ नहीं, और उसका कारण यही है कि आज यूपीआई, जब फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आकर के यहाँ देखते हैं और यूपीआई को वो अप्रिशिएट करते हैं, अपने यहाँ वो लगाना चाहते हैं, दुनिया के दूसरे देश हमारी तरफ देख रहे हैं। दुनिया के लोग जब हमें स्विफ्ट के मामले में कहते थे कि हम आपको बेदखल कर देंगे स्विफ्ट से, हमने उनको ठेंगा दिखा करके हमने उससे रूस से तेल खरीदा, उसके कारण इन्फ्लेशन को डाउन लेकर के आए। हाँ, आज हमारी फूड इन्फ्लेशन काबू में है, आज हमारी फ्यूल इन्फ्लेशन काबू में है, आज हमारा फिस्कल डेफिसिट काबू में है, दुनिया के दूसरे मुल्कों से हम बेहतर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है हमारे यहाँ ये सारा लाभ जो है वो जो हमारे निवेशक हैं उन सबको मिलने वाला है। We'll continue our discussion with our expert while we take a short break at this point of time.
अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक पीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. ADNOC Gas announced a 10-year agreement to supply 0.5 million metric tons per annum of liquefied natural gas (LNG) to GAIL, Gas Authority of India Limited, reinforcing its position in the Asian LNG market and enhancing UAE-India relations. This agreement adds to ADNOC Gas portfolio of international LNG sales agreements with partners such as JAPEX, Total Energies Gas and Power, IOCL and PCI. In response to the growing global demand for natural gas, ADNOC Gas continues to focus on sustainable growth, exemplified by the signing of LNG agreements valued between $9.4 billion and $12 billion in 2023. Dr. Ahmed Mohammad Alabari, CEO of ADNOC Gas, emphasized the significance of the long-term LNG supply agreement with GAIL, highlighting the company's commitment to providing reliable energy solutions. Ashwini, natural gas, which is recognized as the transitional fuel with lower carbon emissions, with this agreement with GAIL and ADNOC Gas, will help India achieve a sustainable growth definitely now with such kind of agreements. Yeah, definitely, because we need such supplies, regular supplies, and for that India had been making efforts also. So I fully agree that this agreement would definitely lead to normalizing the prices of the gas and at the same time pushing the supplies up. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति का उद्देश्य अधिकतम विकास के लिए भौतिक, डिजिटल और सामाजिक आधारभूत ढांचे में निवेश के जरिए विभिन्न तरीकों से संपर्क प्रदान करना है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री गति शक्ति शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी योजना की भूमिका नेटवर्क से लेकर क्षेत्रों तक बढ़ रही है ताकि समाज का बेहतर विकास हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि इसका उद्देश्य सामाजिक परियोजनाओं के लिए आंकड़े जुटाना और विभिन्न विभागों के साथ साझा करना है ताकि बेहतर तरीके से योजनाएं बनाई जा सकें। यहाँ पर समझना चाहेंगे इस पूरी योजना के बारे में और किस रूप में यह लाभ पहुंचा रहा है। देखिए, गति शक्ति अपने आप में एक गेम चेंजर है जी। क्या होता था कि हम अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करते थे और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड है, रेल है, वाटरवेज हैं, एयर है, और इसके साथ ही साथ जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसके साथ जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी, इन सब को समाहित करने वाला जो काम है वो गतिशक्ति कर रहा है। गतिशक्ति के माध्यम से आपको ध्यान होगा कि जब सड़क बनती है तो पहले कोई रोड कटिंग के लिए आ जाते हैं, कोई बिजली विभाग के लोग आते हैं, कोई जल विभाग के लोग आते हैं, कभी ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए आ जाते हैं। जी जी। लेकिन जब सभी विभागों को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ते हुए इसके लिए बाध्य कर दिया जाए कि आप अपनी योजना सम्मिलित रूप से, समन्वित रूप से बनाएं, तो स्वाभाविक है। तो गति शक्ति एक ऐसी इमेजिनेशन हमारे सरकार ने लाए जो वास्तव में बहुत ही जिसको अभिनंदनीय कहा जा सकता है ये प्रयास। क्योंकि आज देखिए कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जरूरी है। And this is going to be shared with other nations free of cost as well, as part of India's commitment for growth in the global south. So that also augurs well for India and its commitment. I tell you, we are now planning for different corridors. IMEC is on the board right now, and it is just earlier on we were all afraid of the Belt Road Initiative of China, and now we are giving an answer by giving IMEC. क्या बात है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर।
सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां आज मिला-जुला रुख दिखा है। जापान का निक्केई 0.1%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.31% लाभ के साथ बंद हुए। उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1%, हांगकांग का हिंगसेंग 2.4% की बड़ी गिरावट लेकर बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.9% की कमी देखने को आई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो शुरुआती रुझान में मजबूती का दौर दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 0.4% और जर्मनी का डेक्स 0.2% ऊपर चल रहा है। लंदन के FTSE 100 में 0.6% की वृद्धि बनी हुई थी। The three major U.S. indices witnessed gain of more than 0.5% yesterday. The Nasdaq Composite Index gained 1.12%. The S&P 500 rose 0.76%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.59%. Very briefly, Ashwini, will the U.S. Federal Reserve policy decision will be in favor of the market? Will they or will they not? It all depends, but I don't see much of the reasons that Fed will reduce the rates, because it's still facing the U.S. economy is still facing some inflation. So and the danger of inflation is also there. True. So I don't see much of the reasons for a big decline in the Fed rates. Okay. Oil prices fell today in intraday trade. Brent crude was trading at $82.27 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude was trading at $76.85 per barrel when reports last came in. चलते हैं सराफा बाजार। MCX में फरवरी अनुबंध वाला सोना समाचार तैयार की जाने तक 235 रुपए मजबूती के साथ 62,421 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 70 रुपए घटकर 72,310 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you for being with us, Ashwini. Thank you. And before we close, the headlines once again. Key domestic indices fall around 1%. Sensex closes at 71,140. Nifty settles at 21,522. ADNOC Gas announces 10-year agreement to supply 0.5 million metric tons per annum of liquefied natural gas to GAIL. And Brent crude trades at $82.38 per barrel in global crude market. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह शहनशाह चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले। तेल क्रीम शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे, कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आपकी आजादी के साथ साथ एनपीएस आपके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। This program is sponsored by IEPFA, Informed Investor, Empowered Investor, Smart Investor. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।